हेलो फ्रेंड्स, एसकेडी ऑडियो स्टार में आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर हिट करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट सिलेबस, जो कि कोर पेपर कॉमर्स पेपर से रिलेटेड है। पेपर कोड 8 है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो के थ्रू नेट का सिलेबस हर 3 साल या 4 साल में अपडेट होता है। सो आफ्टर दिसंबर 2019 नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस था, वो जो हम लोग डिस्कस करने वाले वीडियो में वो था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर एक पेपर के लिए टोटल 84 सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस अपडेट करती है। तो हमारा मेन फोकस है कॉमर्स। सो कॉमर्स टोटल उसमें 10 यूनिट होती है एंड पेपर कोड 8 है। आप एग्ज़ाम फिल करोगे तो आपको पेपर कोड 8 भरना पड़ेगा कॉमर्स के लिए, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहता है, 2 मार्क्स ईच रहता है। टोटल 200 मार्क्स का कोर पेपर का क्वेश्चन रहता है, जो है पेपर 2 आपका कॉमर्स। एंड पेपर 1 जनरल पेपर रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहता है और वो भी 2 मार्क्स ईच का रहता है। तो टोटल नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है एंड टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150। सो हमारा कोर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोर पेपर में टोटल 10 यूनिट्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकेंड यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ यूनिट बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ यूनिट बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, Unit 8 Marketing Management, and Unit 9 Legal Aspects of Business, and Unit 10 is related to Income Tax Act 1961 and Corporate Tax Planning. So friends, if you are seeing the syllabus is very vast related to commerce. It is almost covering all the aspects related to which we are covered in 12th, in graduation and in masters. So as per the discussion, we are focusing on 12th, graduation and in master. If anyone taken commerce in masters or finance in master, so he or she can apply subject commerce in net. तो फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं किस यूनिट पे कितना वेटेज है। तो ईच यूनिट पे इक्वल वेटेज है। सबसे फर्स्ट है यूनिट 1, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिटेल्ड है। सो इसमें कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सोशल कल्चरल फैक्टर एंड CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 135 देयर इज CSR टू बी फॉलोड बाय ईच कंपनी। सब टॉपिक्स पार्ट्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट ड्राइव्स, theory of international trade, government intervention in international trade and tariff and non-tariff barriers, Indian foreign trade policy। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हर 5 साल के लिए बनती है। अभी 2015 से 2020 चल रहा है। FDI फ्रेंड्स, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, balance of payment which is covered in 12th, we also read it in graduation, balance of payment and its component, regional economic integrations like ASEAN, SAARC, NAFTA, EU and regional trade agreements, and also international economic institutions like IMF, International Monetary Fund, World Bank, UNCTAD and many more. So like World Trade Organization, we also study in depth agriculture agreement, GATS agreement, TRIPS and TRIMS agreement. So friends, Unit 1 basically World Economic Forum and Indian economy के कोलैबोरेशन के बारे में आपको रीड करना है और आपको उसका नॉलेज डेवलप करना है। यूनिट 1 बेसिकली इट इज थ्योरेटिकल। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आपको जैसा कि पता है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। सो इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 2, there are 10 questions which covered almost 20 marks. So basic accounting principle concept postulate, partnership account,
Corporate account. In corporate accounting, issue of share, forfeiture of share, reissue of share, and liquidation of company, amalgamation, merger, acquisition, these chapters are there. Holding company account, cost and management accountancy, financial statement analysis like ratio analysis, fund flow analysis, and cash flow analysis. Human resource accounting, in inflation accounting, environmental accounting, Indian accounting standard, and IFRS, international फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. सो फ्रेंड्स ऑडिटिंग एश्योरेंस भी आपको पढ़ना है. थर्ड यूनिट है फ्रेंड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू 12th एंड इन ग्रेजुएशन वी ऑल्सो रीड इकोनॉमिक्स. तो what is the meaning of business economics, objectivity of business firms, demand analysis, law of demand. So it is blend of practical and theoretical aspect, average return, marginal return, consumer behavior, utility analysis, indifference curve analysis, law of variable proportion like law of return to scale and law of return to factor. So theory of cost, short run equilibrium and long run equilibrium, pricing determination like different market under different market, perfect competition, monopoly competition, and there are different pricing strategies also like schematic pricing, pricing penetration. Friends, in fourth unit we have to discuss business finance, and it is related to practical and theoretical aspect also. So in business finance, scope and sources of finance, lease financing, cost of capital and time value of money, capital structure, cost of capital is also there, capital budgeting decision like flexible and fixed budget, conventional and scientific technique and capital budgeting analysis, working capital management, dividend decision and theoretical policies, risk and return analysis, asset scrutinization, international monetary system, foreign exchange market and international financial market. फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न से आता है और कैसा क्वेश्चन आता है. सो वीडियो के अंत तक रहे. यूनिट 5th बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड. सो इसमें बिजनेस स्टैटिक्स वी रीड in 12th part B and in CBSE and ICSE board and in state board also, a business statics part, and in graduation also. So measures of central tendency like mean, median, mode, measures of dispersion, standard deviation, mean deviation, measures of skewness. So basically unit 5 is totally practical base. Probability distribution, binomial theorem, Bayesian theorem, normal distribution, research concept, data analysis, sample and estimation, hypothesis analysis. So these are some chapters which is related to practical. Friends, we are in unit 6, business management and human resource management. So human resource management, we are reading it in master degree in second year in 4th semester. So business management and human resource management, principle and function of management, organizational structure, formal and informal organization, span of control, responsibility and authority, motivation and leadership, corporate governance and business ethics, human resource management, compensation management, performance appraisal including 360-day performance appraisal, collective bargaining and worker participation. So these are some examples and chapters. Friends, 7th unit banking and financial institution. In 12th in economics, macroeconomics, we covered the banking channel and banking system in India. So it is almost like this. So in 12th and in graduation economics, we read how banking flows in India. So types of bank, commercial, regional bank, RRBs, foreign banks and etc. So financial market, money market, capital markets, government security market, Reserve Bank of India, that is Apex Banks of India, top banks है इंडिया का, custodian of government भी बोल सकते हैं. So financial regulatory in India, financial sector reforms and many more. So insurance भी पढ़ना है हम लोग को, IRDA एक्ट भी पढ़ना है. फ्रेंड्स, यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो इन master degree we covered marketing management, marketing concept and approaches, product decisions, pricing decision, factor affecting to pricing decision, pricing policies and strategies. There are scheme pricing, penetrate pricing, low pricing methods which is
almost there in market. Promotion decision, distribution decision, consumer behavior, service marketing, trend in marketing, and logistic management. So we have to discuss it is in the depth. Unit 9, legal aspect of business, like Indian Contract Act 1872, Special Contract Act, Sales of Goods Act 1930, Negotiable Instrument Act 1881. So types of negotiable instrument like check, bearer check, hundis, the Company Act 2013, Limited Liability Partnership LLP Act 2008, the Competition Act 2002, Information Technology Act 2000, IT Amendment Act 2008, the RTI Act 2005, Intellectual Property Right IRP Act, and Goods and Service Tax. Friends, Unit 8, it is most scoring unit and we have to discuss in full depth. So under Unit 10, Income Tax and Corporate Tax Planning. So income tax under Act 1961. What are the basic concepts? Residential status under Section 6 subsection 1, 6 subsection 2. Tax incidence, exempted income under Section 10. Agriculture income under Section 10. And computation of taxable income under various heads under Section 14. Deduction from gross total income under Section 80C to 80U. Assessment of individual and clubbing of income under Section 64 to 60 to 64. International taxation are also there. Double taxation agreement 92 Section 92 and avoidance of mechanism. Transfer pricing Section 92A. Corporate tax planning, concept and significance of corporate tax planning. Deduction and collection of tax TDS Section 192 to 196. Advance payment of tax Section 90 and e-filing of income tax return dash is Section 139. So there are belated return, rectification return, defective return. So these are some kind of return. तो फ्रेंड्स ये पेपर 8 कॉमर्स से रिलेटेड है जिसमें 10 यूनिट है. टोटल ईच यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है. फ्रेंड्स है तो सब ऑब्जेक्टिव्स, पूरे का पूरा क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, बट फॉर अटेम्प्टिंग ऑब्जेक्टिव यू हैव इन डेप्थ नॉलेज. आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में. आप सिर्फ ऊपर से अगर पढ़ लेंगे, जैसे कि अभी हम आपको सिलेबस डिस्कस कर, आप सोचेंगे बस इतना ही है, तो आप भूल कर रहे हैं. आपको डिस्कस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, ईच यूनिट का वीडियो बनाऊं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक इन डेप्थ वीडियो बनाऊं जो आपको नेट एग्जाम क्लियर करने में मदद करे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड उसको व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि मैं मोटिवेट होके और सिलेबस के बारे में और पूरा आपको फ्री नॉलेज दे पाऊँ. तो थैंक यू फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए चैनल को SKD एडू स्टार. और यूनिट 1 की भी सिलेबस में आगे, सब्जेक्ट 1 की भी सिलेबस में आगे आपको डिस्कस करूँगा, जो कि 50 मार्क्स का है एंड जो जनरल पेपर है जिसमें ईच 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. तो थैंक यू फ्रेंड्स.